एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब केरला के मित्र ने प्रेजेंटेशन किया तो उसमें कवर हो गई सीसीपीडी के फंक्शंस के बारे में, तो आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट। इस पैनल में जो हमारे साथ पैनलिस्ट ज्वाइन करेंगे वो दिल्ली से डॉक्टर श्री मुखर्जी साहब हैं, हरियाणा से मक्कर साहब होंगे, जम्मू कश्मीर से इकबाल लोन जी होंगे, गुजरात से राजपूत साहब होंगे एससीपी, राजस्थान से उमाशंकर शर्मा जी होंगे, त्रिपुरा से अचिंतम किलिकदार जी होंगे और उत्तर प्रदेश से सोनकर जी होंगे। हमने कोशिश की है कि जितने भी स्टेट पार्टिसिपेंट्स हैं ऑल आर इंक्लूडेड इन द पैनल डिस्कशन, और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन था उसके बेस में हमने 3 पैनल में बांटा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी स्टेट या यूटी का रिप्रेजेंटेशन अभी तक किसी भी पैनल डिस्कशन में रह गया हो हमारी गलती की वजह से, तो कृपया अनुपमा जी को सूचित कर दें, हम इस पैनल में या इसके बाद वाले पैनल में उनको इंक्लूड कर लेंगे। थोड़ा मेरे पास पॉइंटर दिया था ना, ले आओ पॉइंटर। मैं आप सबको 2 डेफिनेशंस पे मैं 5 मिनट लूंगा। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के 2 डेफिनेशंस हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्योंकि ये दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैंने 1 साल से पॉलिसी का काम देखा है डिपार्टमेंट में, और जब भी मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। और इसका इंटरप्रिटेशन अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक विकास कुमार के केस में किया, जब उन्होंने डायरेक्शंस इशू किए कि जो आपने स्क्राइब की फैसिलिटी दी है, वो ये जो स्क्राइब की, आप लोगों का ध्यान स्क्रीन पे हो, मैं बोल रहा हूँ तो उससे थोड़ा ध्यान दीजिए। जो स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए हमने गाइडलाइंस इशू किए वो सिर्फ पहले पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी नहीं है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है एज पर सेक्शन 2R, लेकिन किसी भी आदमी को डिफिकल्टी है कि वो राइट लिख नहीं सकता, उसको असिस्टेंस चाहिए, तो यू मस्ट मेक ए गाइडलाइन। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर हियर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स may be aware that we have framed a guideline and we have issued it. Pandaji, was it issued in August, no? I think in August, on 10th August 2022, we have issued those guidelines. So if any of you are still not aware, kindly have a look at those guidelines. That has been issued in compliance of the Supreme Court orders. So that guideline has been issued for any persons with disability covered under section 2S and who are not covered under section 2R. That means a person with disability who has not disability more than 40%, but due to certain conditions, he may have difficulty in writing the exam himself. So now there is a facility of a scribe for all those people. So what is person with disability? There are 2-3 words which are very, very important. Means a person with long-term, either physical or mental or intellectual or sensory impairment. So that impairment has to be a long-term impairment. It is not that for one day I fracture my leg and I become incapacitated and I become a person with disability. That is not the meaning of person with disability. As per this act, I am talking of the act, not the individual person. So it has to be a long term. Then what is the next thing? And those impairment in interaction with the barriers which are in our hands, and that is our responsibility to remove those barriers. So a person has a long-term difficulty, impairment, and when that impairment is coupled with the barriers, then what does it lead to? It leads to his non-effective participation in society, equality with others. That is creating inequality for him. And I think the concept of equality and equity was very well discussed in the first session. So I don't want to dwell upon that. Now, what is the person with benchmark disability? That is basically aimed at providing reservation and nothing else. As I understand, I may be wrong, because in all sections where we talk of equality, where we talk of non-discrimination, when we talk of providing facilities for education, when we talk of skilling, when we talk of social security, word used is person with disability. Also, when we talk of the functions of CCPD, the word means person with disability and not with benchmark disability. Only person with benchmark disability is mentioned from section 31 to section 34. Maybe a few more sections, I think, when we talk of special skills. So wherever the question of reservation comes in any form, person with benchmark disability has been mentioned.
And I understand maybe the intention of the act could be that maybe, and everywhere it is mentioned that within the capacity of the government. So maybe our focus, the focus of the act is to address first those people who are in more need. इसीलिए उन्होंने एक 40% का बेंचमार्क रखा है जिसको सरकार से तुरंत मदद की जरूरत है। आप चाहे जॉब रिजर्वेशन की बात ले लीजिए, आप चाहे हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात ले लीजिए, आप चाहे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो सेक्रेटरी सर मेंशन कर रहे थे फॉर 6 to 18 उसकी बात ले लीजिए। All these are intended for persons with benchmark disability. So this distinction I wanted to bring to the notice of this august audience. And if next, now this is basically we know what is the office of CCPD. It functions independently so that the grievances of persons with disability, not benchmark disability, that is the bigger horizon, persons with disability, for ensuring that they enjoy their rights equally. So that is the job of this office. Then this office, of course, this office is created under section 74 of the Act, and then under section 75, which has been dealt upon in very detail in the first session. So, and we are organizing this workshop also under one of the subsections of 75, where it talks of that the job function of CCPD also includes the job of creating awareness. And so this workshop has been organized by the office of CCPD, and this is how the expenditure on this workshop is justified, because it is fully covered under the functions of the city. So now these are the broad categories. Over the years, the office of CCPD has been functioning since I think 1998. So broadly, these are the categories in which we have been receiving complaints in the office of Chief Commissioner with persons with disability, and I think mostly state commissioners may also be receiving the complaints under these provisions only. So basically relating to employment, reservation in job, relaxation in employment, service matters, transfer, promotion, then education, facilities as well as reservations, then conduct of examination, very important. Then of course there are issues regarding disability certificates, we receive complaints about that also. Then accessibility, which is very, very important and a great enabler for persons with disability. Then benefits of various schemes. And I have got also a number which I would like to share. Since the office of CCPD has been made functional, we have received close to 40,000, 39,773 grievances, and I am happy to share that 39,558 grievances out of 39,773 have been disposed of till date. And when the COVID pandemic came in, we started the online grievance hearing system since June 2020, and so far 1,094 online grievances have also. These are, I think, not just for mention that we don't burden with the complainant to load all these papers. So these are the things. We try to make the system as seamless, as smooth. Though there are, I must basically accede that there are basically quite a lot of scope for improvement, and it is still not to the satisfaction of our secretary sir, the level of basically smoothness he wants, but we are trying to make it as smooth as that is an ongoing process. And then basically we generally receive, and then we issue notice, and then we basically it is a court proceedings like that, and then we try to resolve it as quickly as it is possible. Then now I would like to touch upon few of the judgments, because Secretary Sir specifically asked me you dwell upon that. So mostly you see about 75% to 85% of the recommendations of CCPD has been accepted by the organizations who have been concerned. So I think taking into consideration various aspects, this may be taken as something which we must appreciate, not only for the office of CCPD but for the organizations who have been basically accepting the recommendations of CCPD. So we must
be respectful and basically commendable for those organizations also. Highest number is regarding transfer, because a transfer is basically place of posting is very important for a person with disability. So mostly we receive a lot of complaints, and mostly after CCPD's intervention, the organizations try to accommodate people for transfer. Now, yes, as per the RPWD Act, reservation in higher education institutions have to be 5%. So with the intervention of CCPD, UPC net has increased it. Now, as far as reservation in job is concerned, so here 4-5 things are very, very important. And this silence safety case we have referred to here, it is a detailed judgment issued by the Office of CCPD in 2020. Basically, the important issues in the matter is that, and all the states have been very elaborately mentioned in this judgment as to what are the areas which we need to basically take care. So it starts with identification of posts, because before extending reservation, we have to first identify the posts, which are the posts which are suitable. Then we have to, after identification, we have to ensure that reservation is made as per the provision. Then we will issue the notification of vacancy. Then exam fee for person with disability has to be waived. Then, of course, this reservation is only for person with benchmark disability, so I stand corrected. Then process has to be where all their required accommodation, required things has to be taken care of. Then relaxed criteria, because अभी इक्विटी की बात हो रही थी, तो हम लोग समझते हैं उनको हम सेम क्राइटेरिया पे नहीं नाप सकते जो पोस्ट रिजर्व, so relaxed criteria has to be there. And then selection or non-selection, whatever it is. So all these things have been detailed, various OM of DOPT, various provisions regarding identifications. All these things have been elaborately mentioned in this judgment. And I think I would recommend to read this judgment to understand the things and to find the things at one place. And Dheeraj Dhananjay Sarda is also like this. Then this is the issue of reasonable accommodation. This is in our hands. This is in the hands of all the employers. Here, it is just a matter of attitude. Because maybe sometimes a very little intervention will be a great enabler for a person with disability who is working with us or who is with us. It is equally applicable for schools, it is equally applicable for office setup, it is equally, maybe if somebody is here, it is equally applicable for here. So this is, and in one of the Supreme Court case, Supreme Court has elaborated on this issue in great detail in reasonable accommodation. And they have given examples of some foreign judgments, some foreign provisions also. I don't remember exactly the name of the case, but it is a great judgment where this concept has been detailed at quite length. Then, relating to the reservation, there is one very important concept which all of you know, Section 34, where there is a proviso to exempt an organization or post from providing reservation. So, in this context, I would like to mention a few examples. I would not name the organization. We received, and so far, I must inform you all, and I will ask states when we will join in the panel discussion, that so far, this government of India, central government, has given exemption only in 3 or 4 cases. Of course, armed forces, paramilitary forces, and recently we have given to IPS, which is under challenge before the Supreme Court. So we don't know what will be the outcome. And we have provided partially to few sensitive organizations. And in one of the recent meetings, we received a proposal from another sensitive organization, I would not name, requesting for exempting the post of lawyer. And for whom? For person with visual impairment. So, we discussed, committee discussed, why do you want exemption for lawyer? There are so many lawyers who are visually impaired and they are performing well. S.K. Runta, you all may be knowing, I know him, many more are there. So,
They said, no, this is a sensitive organization, so we fear he will not be able to examine, he will not be able to present the case properly. So that was just issue of attitude, that we make prejudgment about the capability of a person. Yesterday evening we were all part of that beautiful function, and what a comparing it was. I think it was unparalleled. Who was the person? Person with visually impaired. So I think this is a very important point which we must take into consideration. That first we should treat the person equally capable. We in the first time see that the person he may not be capable, and that brings in the problem. So the committee was able to convince that organization, you go and talk to your seniors, we are not considering it, because we have very live examples where persons are performing the job of this lawyer very well. So your concerns are not well founded, and I think it was not considered. So this is, and I think many states may have also some examples. Then accessibility, this is very important. And here I would like to just continue the points which was discussed in the previous session, that all our existing public buildings have to be made accessible, and the timeline is over. So far we have received only extension request from Tamil Nadu, which we have granted. I think we have received from few more states, maybe Kerala and Andhra, but I think that is under consideration. So since all states are represented here, kindly see that if we have not been able to make all the public buildings accessible in terms of provision of section 45 of the Act, we have actually violated the provisions. So there is an enabling provision to seek extension with your action plan, and kindly seek the extension from the central government. And this power rests only with the central government. And under section 40 of the Act, I think that is, these are the issues in which we have received the complaints and we have issued judgments, and they have been well accepted. Family pension is one issue, because you know that before you retire, you have to declare your dependent, basically family members who is person with disability, for continuing to receive pension. So there was some issues, so CCPD Office clarified in this judgment. Then I was talking about this section 40. Here the central government, here the power is central government, shall in consultation with the Chief Commissioner formulate rules for persons with disabilities, laying down the standards of accessibility. So far we have laid down the standards for accessibility in physical infrastructure in 2017, then ICT, and then in some transportation. But I have a list, various ministries are working on providing standards for accessibility in respective areas of services. I have a list of ministries I will share with you. But please, this is important to note that this power rests with the central government, and the states are required to follow the rules made under this section by the central government, including for physical accessibility, which the states have already been following. I think Kerala mentioned of this. 18 organizations of central government have formulated rules guidelines in consultation with CCPD. These are the ministries: Ministries of Railways, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Civil Aviation. We know that in the civil aviation sectors, a lot of work has been done. You see, when we go to the airport, and even Indigo, etc., are making the basically, instead of the ladders, they provide the, so that wheelchair can get in. Ministry of Electronics and Information Technology, Road Transport and Highways, Housing and Urban Affairs, which is the physical infrastructure, that they have already laid down the harmonized guidelines, and the revised version has also come up now. Education, Bureau of Indian Standards, Culture, CIC Division, Ministry of Home Affairs, National Informatics Centers, and then Ministry of Jal Shakti, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Sports, UGC, Ports, Shipping and Waterways, Rural Development, Tourism. So these are 18 ministries, departments whose rules for under section 40 have been seen and vetted by the office of CCPD, and they are now in the process of getting notified
under the RPWD rules, because those have to be basically brought in under section under I think rule 15 of the RPWD rules, and then we all need to follow those rules for maintaining those standards. So thank you very much, and if I think, sir, we can start the panel discussion afresh, and then we can take the comments from the audience. So now I would request the panelists. Delhi, Shri Mukherjee Sahab, please join. Makkar Sahab, Iqbal Lon Sahab, Rajput Sahab, Sharma ji, Rajasthan से, और चिंतन किलिकदर जी त्रिपुरा से, और सोनकर साहब, सोनकर जी को लेके आइए प्लीज। कोई सोनकर साहब को थोड़ा फैसिलिटेट करें। इसमें just 2 quick points on first statement में। पहला we heard that 18 central ministries have issued guidelines on physical access। पर आपके स्टेट में जो स्टेट के बाई लॉज हैं, म्यूनसिपल बाई लॉज हैं, सिटी बाई लॉज है बिल्डिंग बनाने, डू दे फॉलो दो? कोई फायदा नहीं। आप अपने टाउन प्लानर्स को ट्रेनिंग दीजिए। वी हैव इनिशिएटेड डायलॉग विद CPWD नेशनल अकेडमी गाजियाबाद। फिर जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो लोग, वो सॉफ्टवेयर नहीं बता देना चाहिए बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं ऐसी स्टैंडर्ड्स। आप थोड़ा डीपर लेवल पे काम, सिर्फ गाइडलाइन निकालने से कुछ नहीं होता। वी हैव टू रीच dig deep and train people very fast. Make sure the bylaws are compatible, the software is compatible, और सॉफ्टवेयर ही मना कर दें ये पब्लिक बिल्डिंग है, ये सिनेमा है, ये रेस्टोरेंट है, ये आपकी सरकारी बिल्डिंग है, ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज की बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग है, ये एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए इसको मान्यता नहीं दी जाएगी। दूसरा अभी वाटर में जैसे आपके यहाँ भी टॉयलेट्स बन रही हैं, बहुत जिला परिषद म्यूनसिपैलिटीज, ये भी भारत सरकार भी देती है। डेटा शोज 1 in 4 फैमिलीज एक्टिव दिव्यांग। आपकी टॉयलेट स्कीम में है क्या कि फैमिली को अगर दिव्यांग टॉयलेट की जरूरत है तो उसको डबल पैकेज नॉर्मल टॉयलेट, तो इस तरह की चीज़ें लाइक CCPDs हो, go into these. Thank you, sir. So I think I would start with in the order in which it is there. So in Delhi, so sir, you can just give the brief about any important judgments which you have passed, or any important basically important development which has taken place with the intervention of the Office of the State Commissioner, Delhi. Thank you. Thank you very much for this opportunity. Now, you all know that grievance management is one of the important functions of all the state commissioners. The state commissioners inquired may also suo moto. We should do it, and I'll give you 2 examples where we have done it little later. Or any type of deprivation of the rights of the PWD. Now, variety of grievances come, been already discussed by Mr. Chan. So mainly in Delhi, I found that it comes from education, police, municipal bodies, health, family, harassment, and human rights and accessibility. So all complaints are assigned in Delhi, at least. I mean, everywhere it must be done so that we have a unique incident code and number assigned subject-wise, so that we know exactly which particular subject has got what are the number of complaints. So in Delhi, we have done one more thing, and I think other states also must be doing it. We have appointed grievance redressal officers, GROs. So in Delhi, we have got 216 already, and another 50 odd are in the process. And we also have from more than 300 organizations, besides the government organizations, these EOPs, equal opportunity policies, which have been framed and been displayed. In the post-COVID, we had almost more than 1,000 complaints and grievances pending in Delhi, which because there was no SCPD there, and I took over only in January 21. So all these per day, more than 5, 6 each in the evening, morning sessions, we could complete all the grievances. And 2 suo moto grievances in general, which I have taken, and Honorable High Court Delhi has taken cognizance of one of them, is on accessibility and rights of way, especially in front of the hospitals. Now, you will see that many hospitals do not have the access, and especially if it is tactile or for white cane, PWDs. So there is a lot of encroachment there, parking and all that.
and in front of the national important institute like All India Institute of Medical Sciences and Safdarjung hospitals and all that. So we took cognizance, and Honorable High Court Delhi issued summons to each and every PWD executive engineer in Delhi, wherein the High Court says that each executive engineer will have to be on a wheelchair and survey minimum 2 kilometers and submit a report. And against 16 PWD executive engineers, they issued contempt. So the engineering chief Delhi came running to me. He said, "Aapka cognizance ye hai kindly." So I talked to the honorable bench, and then we got it. The punishment was not there, but okay. So that's a tough line the headquarters. Honorable High Court took on one of my suo motu, accessibility. But two cases are already in the High Court challenge, as the Secretary yesterday mentioned. One from a hospital, wherein it's a very interesting case where a particular PWD patient with no one actually, one cousin brother who lives in US, and he suffered post-COVID badly, and in a very renowned hospital, Max, admitted in one of the Max hospital in Delhi, Patparganj. And the hospital could not release him because of non-payment. So then I had to issue a order wherein I said that I lock up your hospital. So then the others did not take the phone call even from my office or from me. Then the MS came running and we settled that issue. And there are several other cases, many have been discussed by Mr. Jha initially. So there was a PWD lady, Sonam Khan, as a physical education and therapist, and as assistant professor in one of the Delhi University colleges. So she was trying for last 4 years and not able to get it. So she came to me, and then with the intervention orders from then she got last year, and she was quite happy with it. Then some PWDs had problems in opening bank account and accessibility. So I had ordered the banks to go to the house of the PWD and open that account, and that was also done. And there were many CCPD referrals also which come to Delhi, and 92% is the satisfaction rate so far as the grievances in Delhi are concerned. And several disability pension issues also are referred by CCPD office to our office. Each district social welfare office now functions very, very nicely, and they are all GROs. And during the COVID especially, we took some very important decisions which are now continuing post-COVID. There is all the PWDs from outside also, wherever they got stuck in Delhi. So they are also taken care of with their stay. Sorry, and you have to wind up. Okay. One important issue, as I was discussing with some friends, is of the national trust and adaptation issue. This is a very important issue. Now, the only parent expired during COVID. Now, this gentleman, Vivek Kapoor, is a 49-year-old, but mind with a 2-year-old child. Now, there is a very difficult issue how to rehabilitate him. So I got in touch with an NGO called Muskan, whom we support and we have collaboration with. Now, with the banks, with the DM heads that particular society, the process. So we could, with the help of police, the banks, and there's no relative of this particular chap. No. And the mother who expired during the COVID, the only living parent, the house owner had taken a lot of items. So police case was filed by my office. We did that, and then the DM took over. And ultimately we could hand over this gentleman, and he is nicely rehabilitated in Muskan, in Delhi. Vasant who is there. And I get now a lot of requests and calls. In fact, one IS officer from Uttarakhand also requested the 2 sisters whom also we have rehabilitated in Muskan, and no family members. So like this, there are many other cases. This is a very important issue, so I thought. And one more issue I'd like to flag, with a high support need PWDs and evacuation of them during any natural or unnatural calamity. The DM's office is supposed to run a management center, call center.
Now there the civil defense people are there who are supposed to have. So in Delhi, what we have done that each area, each HSN, high support need PWDs, we have mapped them, and each district wise, and their names are prominently with their addresses and the mobile numbers, everything, with their care, supporters who would evacuate them during any type of natural or any calamity. So I think these are the main issues. And one more thing for consideration of the ministry about the pension. The pension is, different states have different pension. In Delhi we give 2,500. That's the problem. From everywhere, from all other adjoining states, they come and they try and reside here on encroached land and try and get the pension, because Delhi pensions are higher. So if there could be one particular, ruling from the center, there has to be a benchmark and a particular, limit cap could be there, lowest one. If the state wants to give more, that's okay. But 800,000 rupees vis-a-vis 2,500, they all flow can come to Delhi. That's another issue. Thank you. जो वेलफेयर की स्कीम्स तो स्टेट की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सिर्फ अमाउंट का फर्क नहीं है। मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, इसमें डिफरेंट स्टेट्स में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर इन गोवा में ही देयर आर 2 क्राइटेरिया। अगर 80 या 90% उन्होंने मेंशन किया था, उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो अमाउंट इज एक्ट 3,500। If it is less than that, amount is 2,500. I am from Bihar. In Bihar, I think eligibility is 50 or 60%. So it is the state's mandate. So local body also additional. हाँ जी। तो उसमें आप तो दिल्ली में सबल हैं, तो आप तो 2,500 दे रहे हैं, और अगर इस बहाने लोग दिल्ली आ रहे हैं और आपके हाथ को मजबूत कर रहे हैं, तो ये हम भी बाहर से निकल जाए। चलिए मक्कर साहब, मैं पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, because we have to wind it up by 12:30. So kindly bear with the timelines and thank you. धन्यवाद। मैं सीधा विषय पे आता हूँ। विषय बड़ा लिमिटेड है और उस विषय के केंद्रित ही मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहूँगा। हमने सभी 22 जिलों में सेक्शन 72 RPWD एक्ट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कमेटी का गठन किया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर के चेयरपर्सन होते हैं, सबको मालूम है। तो ग्रीवेंस सबसे पहले लोकली दिव्यांग DLC के पास थ्रू DSW डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर इज द मेंबर सेक्रेटरी। थ्रू हिम ही कैन lodge his grievance to the local committee. One thing. Second option we have provided, we have created a portal, Divyang Mitra Haryana. It's very easy to remember. Divyang Mitra, scpd.haryana.gov.in. Kindly visited. 2,50,000 persons have already visited. This was created on 3rd of December 2021 and was operational with effect from January 22। तो अभी करीब ये कह सकते हैं कि 1 साल हो गया, तो जन्म को 1 साल फर्स्ट उसका बर्थडे हुआ है, और 1 साल में 2.5 लाख लोगों ने उसको विजिट करा है। ड्यू टू दैट, कारण क्या है, 17 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर डेफिनेशन को उसको छोड़ दीजिए, लास्ट चैप्टर रिपीलिंग को छोड़ दीजिए, 15 चैप्टर हैं। सभी 15 चैप्टर्स पर स्टेट कमिश्नर के कोर्ट से ऑर्डर्स पास हुए हैं, और जिसमें 2,500 केसेस डिसाइड हो चुके हैं। 1,500 केसेस में कंप्लायंस रिपोर्ट आ चुकी है, और 800 केसेस में, मोर देन 800 केसेस में पेनल्टी इम्पोज हुई है। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल, सुमोटो कॉग्निजेंस कितनी तरह का दिया गया होगा, स्टे कितनी जगह दिया गया होगा, वो मुझे डिटेल में इसलिए जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लिंक बता दिया है। हाई कोर्ट के खिलाफ स्टे दिया गया। मिस्टर राजेश अग्रवाल टेलिंग शुड बिकम ए प्रेसिडेंट, लेट द सुप्रीम कोर्ट इशू सम डायरेक्शन एंड सो ऑन। हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसने लोअर जुडिशरी की पोस्टें निकाली। पंजाब में 4% दे दिया बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट में। हरियाणा में क्या किया, 396 पोस्टें शायद निकाली थी, उसमें ओनली 5 पोस्ट वर रिजर्व एंड दोज ओनली फॉर जनरल कैंडिडेट्स। तो सुमोटो मैंने कॉग्निजेंस लिया और उसको स्टे कर दिया, और हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार किया
हाई कोर्ट एक्सेप्टेड और उन्होंने सारी वो कैंसिल की और उसके दोबारा से इशू करा, तो वो एक्सेप्ट हुआ। हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट करा। चीफ जस्टिस ने मुझे पर्सनली कॉल किया कि यस मिस्टर मक्कल यू आर डूइंग इट, तो इतना ही बहुत होता है शाबाशी के लिए, कोर्ट के चीफ जस्टिस बोलते हैं। बाकी मैंने छोड़ा नहीं चीफ सेक्रेटरी को भी, उनके खिलाफ भी पेनल्टी इम्पोज की है और वो पेनल्टी रिकवर भी हुई है। और डायरेक्टर जनरल डीजीपी के खिलाफ भी पेनल्टी इम्पोज करी है एंड दैट हैज आल्सो बीन रिकवर्ड। 1 लाख रुपया अभी गुरुग्राम में हमारा एक होटल चलता है रास्ता करके नाम है उसका, लखनऊ से एक लड़की पांडे शायद उसका नाम, अखबार में भी आया था, ये अखबार में भी आया। यस एंड शी वेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनसीआर। तो गुरुग्राम में आई फैमिली के साथ में, शिवाजी नाइट एंट्री एंड मोटर कॉग्निजेंस वर टेकन बाय मी एंड इवन CCPD has also taken its cognizance, but because the matter relates to Haryana, that it was referred to me and I took it cognizance. They unconditionally and unqualified tendered their apology, but that was not accepted. Apology acceptance means they are committed offence. Therefore, 1 lakh penalty was imposed and they were directed to deposit it in the account of one NGO. NGO being run by government of Haryana, department with ब्लाइंड स्कूल चलता है, उसको विदिन 2 वीक्स में डिपॉजिट करने का लिखा है। मक्कर साहब विद दिस नोट सर 2 or 3 if you permit me, and due to taking cognizance of complaints either by filing some person you may go to the portal, उसके कारण से ये हुआ कि ट्रांसपोर्टर डिपार्टमेंट में सीट नंबर 3 इज नाउ रिजर्व फॉर पर्सनल यूज। हरियाणा में 1700 बसें खरीदी जानी थी, वो बसों को डेफर किया गया कि वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है। के लिए कैबिनेट की मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर साहब की, मुझे बुलाया गया मीटिंग में, मैंने प्रेजेंटेशन दिया। तो ऑर्डर क्या है आपका, ये क्यों है, देन सेक्शन 40 to 48 सारा उनको डिटेल में बताया, चैप्टर 8 जो हमारा है वो बताने के बाद 900 बसें जो दिल्ली में हमारे DTC वाले खरीदते हैं वो वाली बसें हरियाणा में आ गई हैं, those have been purchased. तो दिस द इफेक्ट। और बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के खिलाफ किया। एक और बात वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर, 95 एक्ट PWD एक्ट 95 केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 7 to 1996 वी नो। हमने इसको 1 जनवरी 96 से किया। 3% रिजर्वेशन वाज देयर, बट देयर आर नो वर्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इट वाज ओनली रिक्रूटमेंट 3%। Unfortunately, all people, including the state of Haryana and even government of India, right, meant for direct recruitment was provided, 3% was provided up to 18 for 70 in some of the departments, some departments even they were provided. So then I took sumo to cognizance। उसके बाद 2 नोटिफिकेशन जारी हुई हरियाणा में। एक नोटिफिकेशन जारी हुई जिसके अनुसार सभी बैकलॉग कैलकुलेशन होना है 1 जनवरी 1996 से। We implemented it with effect from 1st January 1996। उससे हमने 15/11/2021 को नोटिफाई करा है कि ऑल डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन, एडिट ऑर्गेनाइजेशन वो कैलकुलेट करेंगे। स्टेट कमिश्नर शैल इंटरवीन, देयर रोस्टर रजिस्टर शैल बी गॉट वेरीफाइड बाय द स्टेट। रोस्टर रजिस्टर हम वेरीफाई करने के पहले उन्होंने तो घपला कर दिया ना। वो जो विजुअली इंपेयर्ड की पोस्ट थी, आप कितने दिखाई देते हैं एम्प्लॉय, आपको दिखाई देते हैं क्या विजुअली इंपेयर्ड? हियरिंग इंपेयर्ड दिखाई देते हैं क्या? क्यों नहीं दिखाई देते? उनकी पोस्टें खा गए दूसरे लोग, ये दिखा करके कि दे आर नॉट अवेलेबल। हमने ऐड किया, कहाँ ऐड किया दिखाओ ना। नो एडवर्टीजमेंट वाज इवन मेड। और ये भी थी तो फिर उसमें ये भी दिया हुआ है ना, एक बार नहीं मिला तो दूसरी बार फिर इंटरचेंज है, नो इंटरचेंज वाज अडॉप्टेड है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में करके स्टेट कमिश्नर वेरीफाई कर रहा। और दूसरी बात हमने करी कि जो एम्प्लॉय लगे भी थे तो उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो राजीव गुप्ता को इम्प्लीमेंट करने वाला स्टेट ऑफ हरियाणा फर्स्ट है जिसने नोटिफाई कराया। हमने पहले तो करा दिया था 17/19/2007, 4/2017 को किया था, लेकिन एटीट्यूडनल बैरियर इज द मेन बैरियर फॉर द पर्सनल बिजनेस एंड दिस इज आल्सो बैरियर बिफोर स्टेट कमिश्नर्स। उनके सामने भी एक बैरियर है, उनको कितनी टक्कर लेनी पड़ती है, कितना मरना पड़ता है, रोज मरना पड़ता है। तो वो खासतौर पर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी उसका एटीट्यूड वो मेन बैरियर है। साहब तो आई विल रिक्वेस्ट, ठीक है, हम ये भी एक इसको भी हम एक बैरियर क्रिएट ना करें, आप दूसरे टाइम भी इज अ बैरियर ना, ठीक है। आई रिस्पेक्ट एंड विद दीस वर्ड्स आई से माय
Thanks to this congress. लोन साहब providing this opportunity. Cross questioning भी मैं चाह रहा था, आप में से भी क्वेश्चन करते तो I must have answered. और केरला के हमारे जो जज साहब आए हुए हैं उनको भी आंसर इसलिए दूंगा कि I have also been a judge, so I can answer him, I can reply because I am civil code, I am criminal code, and section 82 subsection 2 says every proceeding before the state commission is a judicial proceeding. Once it is judicial proceeding, then we obtain the hack of CPC. Civil procedure code permit you, then definitely you may impose penalty. High court. Thank you. Some petitions have also been filed against the orders of the state commissioner providing imposing penalty. Those have been challenged, but writ petition was challenged. चलिए, थैंक यू. अब इक्वाल लोन्स आप ब्रीफ में जो इम्पोर्टेंट चीजें कहना चाहें, और एक चीज बताइएगा, वो अब मक्कर साहब के पास में दोबारा नहीं जाऊंगा, कि आपने जो हमारा सेक्शन 84 है स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश करने का, अगर ये मैं जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी स्टेट ने सेटअप किया है तो वो मेंशन कर दीजिए. Thank you very much for providing me this opportunity to work best interests of people, a person with disability. The Jammu and Kashmir scenario comes into limelight when on the 5th August 2019, the landmark legislation, that is the Reorganization Act, was introduced to Jammu and Kashmir. And by virtue of that, we got also integrated to the mainland with RPW. There was no uniformity. So by virtue of that, advertisement on October 2021 was issued for the appointment of the person with disabilities, and I got appointed after open recruitment in the month of October 2020. So it is 3 months. But let me quickly go back to set. I think Gaurav is around. UDID, when I took UDID in the month of October, was 60,000 and today it is 85,000. So he is 25,000 plus is because of the mobilization. But I'll quickly go to the grievances. I have received 72 grievances during these tenure, during these 3 months, and out of these 25 are pending. And there is the third and important thing is Jammu and Kashmir for the first time have established 2 offices for commissioner for person. There is one in Jammu and one in Satan. So both will be functional not for 6 months and 6 months like that was the previous practice. Yes, change of darbar, so there will be no darbar, but we have endless darbar. So, and then there is the issue of, which I was discussing earlier about CRC. We have CRC in Srinagar. Unfortunately, that is because of the apathy of local people who are fighting, and it is almost dysfunctional. And I would request strongly because of lot of things. First point of contact that somebody from social welfare department or maybe deputed because of, and also the aspirations of Jammu province. We have allocated land here, but there is no CRC. I would request sir for kind intervention. And quickly, because I'm making it very quick, there is something called a state fund and central fund. There is no information about what is happening with this and also with the state fund, so that lessons can be learned. What is it that, what are the guidelines that is driven when it comes to state fund, and how is it utilized if there is no emergency fund? And my point, yeah, because there is what is happening with the state and central fund, and there is a very poor budgeting when it comes to research in disability. And sixth and very important, rather critical question is, very recently I came with the question from the parliament. But states have their own helpline numbers or not. On the analogy and matters, I would strongly recommend that like Childline we don't have disabled friendly or any helpline number, toll free nationally. We should be recommended strongly because then there are MIS systems which can be, there are the patterns which should be understood. So there is state helpline or national helpline, apart from Kiran, which is exclusively for other purposes. And I would also recommend that in consultation with stakeholders, there should be a disability budgeting, like we did child protection budgeting in state previously in Jammu and Kashmir. But I would strongly recommend that if we will do the disabled budgeting,
at state, UT or national level, we'll come to know that where as a country we are, how much money and what is the rehabilitation, other things. Then earlier sir was referring about the individual care plan. Sir, it is part of the larger framework of rehabilitation plan. At every individual plan, rather DDRC was supposed to create an individual care plan at village or block level so that it is addressed. And like the pattern and analogy of aspirational districts, I would request again that if some states or districts which needs hand holding can be bought on the analogy and pattern of aspirational districts, and so that we can showcase, like say Kerala is doing very well, J&K will travel, the offices will travel to Kerala and see what all they are doing. Even we are struggling. I was struggling to understand how much schemes. Tamil Nadu has 15 schemes, state schemes. J&K has only one. Then I went to Kerala website. There are no visible websites when it comes to, like Haryana has 22 states that is, and finally, which is the more important and the critical thing, because I was part of the IVL budget very recently in US in a place called Philadelphia, where Philadelphia is considered to be the place where United Nations take figures every year as a matter of audit. What is it that state, because we have ratified as a country to United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities. I was surprised to see that the entire country, India, is the hallmark when it comes to the piece of legislation called RPWD Act. But unfortunately, there is no comprehensive mechanism to implement this act. Like we have Juvenile Justice Act, and there is a scheme called Integrated Child Protection Scheme, and there is a mechanism at district level, we have District Child Protection Unit. And if, with the permission, we in the Social Welfare Department and Commission for Persons with Disabilities, from last 15 days, we are working on a comprehensive action plan based on 21 disciplines of disabilities, based on issues and concerns that are raised in the entire country. And the first draft proposal is with us. We are submitting it to the finance, and it would be done through the state fund, which is part of it. And if anybody would want to see that scheme, I have a draft proposal. I can share it with Jasar, and he can circulate further, because I have studied in UNICEF, I have studied the log frames. So first the diagnosis, what is the problem? What are the issues? What are the concerns? There is something, oh, sorry. Thank you. Now I can Share the draft. I would request Rajputji kindly. Good morning. Actually, when I take over, I observed that these are very less, 70 to 80 here. And on a formal basis, boycott, then we got very good result. Because next to come 500 the mobile code. Last year, if you could, we have achieved a target 140 cases, and this time we have crossed mark of 400. I observed during the course of hearing the main concern of regarding employment. We have limitation. We have 4% reservation on the 5% welfare scale. So various governments, central government agencies, state government agencies are working for self-employment. What I did on the day of hearing, I called all these agencies. The post processing is over to be presentation in detail, and they have to explain the modality to contact other schemes for them. We have formed special group, SSG group for disabled, means urban livelihood mission, rural livelihood mission. We have one agency called Udaan Agro. They are giving up to 35% group processing, and our own finance and development corporation. Because once we start processing at the 10:30 or so, almost whole day we occupied sitting. Usually लोग क्या करते पहले आ रहे and half में क्योंकि they are coming from morning, so I arrange food packets for them. Even they are making use of it. Apart from this self-employment related presentations, I organize disability certificate also on the spot.
So these few, due to these few efforts, we are getting good number of cases. Once we go to the districts, so many NGOs come and automatically we see what, so this is what I. थैंक यू राघव साहब। अब मैं ये त्रिपुरा के अपने मित्र से रिक्वेस्ट करता हूँ 2 मिनट में, बिकॉज राजस्थान के पास एक प्रेजेंटेशन है तो उनको हम लास्ट में ले लेंगे। सबको धन्यवाद। जो बहुत ही अच्छा ये पे प्लेटफॉर्म में हम लोग है, तो उसमें थोड़ा इशू थे। मेरा स्टेट के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन जो 2 एक इशू है वो मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यूडीआईडी में दिक्कत हो रहा है। जो दोज आर मेंटली इल पेशेंट, जैसे हमारा मॉडर्न सेकेंडरी हॉस्पिटल में है, हाफ होम में है, उनके लिए आधार कार्ड इशू मतलब जो यूडीआईडी कार्ड इशू करने में तकलीफ हो रहा है, क्योंकि जो आधार कार्ड उनका पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास आधार कार्ड भी नहीं होता है। तो उसका मैंने एक बार जिक्र भी किया था दूसरी मीटिंग पे, जो उसका ये ऑप्शन होना चाहिए। दोज हु आर मेंटली इल पेशेंट्स, उनके लिए यूडीआईडी में जो आधार कार्ड जो ये है उस पर उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन जो इजी प्रोसेस में हो, तो वो थोड़ा आप तो काइंडली देख लेना। इज द लिंक प्लेटफॉर्म। दूसरी बात है जो स्टेट कमिश्नर का जो इशू है, स्टेट कमिश्नर आई एम होल्डिंग द चार्ज ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर फ्रॉम 2009। तो वहाँ पे मेनली स्टेट कमिश्नर का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, तो मैं मुझका अकेला ही सब कुछ करना पड़ता है। स्टेट छोटा है, इस हिसाब से केसेस कम होता है, ग्रीवेंसेस भी कम होता है, तो आई कैन हैंडल। मैं अदर चार्ज में डिसेबिलिटी का जो मेन जो ये है डिपार्टमेंट का वो मैं देखता हूँ। नशा मुक्त भारत का पूरा का स्टेट मेडल ऑफिसर मैं ही हूँ, तो 2-3 इशू में मैं भी देखता हूँ, 2 सेंसिटिव इशू। तो उसका जो स्ट्रेंथन करने के लिए अर्लियर आपका सीसीपीडी के ऑफिस से आए थे बहुत बहुत 2 बार चिट्ठी सभी स्टेट गवर्नमेंट और सीएस के पास, तो स्ट्रेंथनिंग द ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिश्नर। ये तो दोबारा अभी स्लो हो गया है, तो दोबारा आप लोग यहाँ से इनिशिएटिव लीजिए। इसका आज 2 दिन वर्कशॉप गया है जो स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, क्योंकि अभी केसेस कम मैं अकेला संभाल ले रहा हूँ, लेकिन जब केसेस ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा होने से केसेस ज़्यादा हो कॉमन से हम लोग चाहते हैं जो इसमें कोई दिक्कत ना आए, काम करने में दिक्कत ना आए। और यहाँ से कुछ रिकमेंडेशन जाए तो जो स्टेट में अभी तक किया नहीं वो काइंडली कर दीजिए। और दूसरा इशू था हमारा ठीक है। और यूडीआईडी में एक बात है, ऑलरेडी हमने चिट्ठी भी दिया था मिनिस्ट्री को। यहाँ पे गौरव जी भी है, जेएस आए थे लास्ट से मंथ ऑफ दिसंबर में, यादव सर आए थे, हमारा सीएस के बैच में थे, उनके साथ मीटिंग हुआ था। हमारा पूरा का छोटे इशू था, चिट्ठी इसमें बोला था जो एक्चुअली जो टोटल फिगर जो है वहाँ पे देखा रहा है 89,000, लेकिन हमने जो डोर टू डोर जो सर्वे तो अंगनवाड़ी वर्क का जो हमारा जो ये मैकेनिज्म है, डोर टू डोर डीएम ने सर्वे कराया, तो हमारा आया 42,000 समथिंग आया डोर टू सर्वे। तो इस हिसाब से हमारा अभी 32,000 इशू हो गई यूडीआईडी का, अभी नियर अबाउट 7,000-8,000 हमको कंप्लीट करना है। तो लेकिन 89,000 दिखाने से हमारा क्या होता है, हमारा जो परसेंटेज कम हो जाता है। और सिंस हमारा एमओएस भी हमारा त्रिपुरा स्टेट से है, तो वो भी हमको बार बार बोलता है, लेकिन एक टेक्निकल इशू हो गया है। हमने 1-2 बार मिनिस्ट्री को चिट्ठी भी दिया है, काइंडली देखिए। तो वो तो देख लेना, तो वही 2-3 इशू है। ओके, थैंक यू। सोनकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सोनकर जी को माइक पकड़ा दें कि सोनकर जी में अपनी बातें रखें, बैठ के रखिए प्लीज, बैठ के आप जितनी बातें हुई उसके अतिरिक्त जो अगर कोई नई बात है उत्तर प्रदेश के संबंध में तो आप कृपया शेयर करिए। थैंक यू। Good afternoon to all of you. First of all, I would like to thanks to God to have such a secretary sahab and officials who have sensitization, who have the sensitization towards the PWDs. मैं उत्तर प्रदेश के विषय में बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण के अंदर पहले ये विभाग हुआ करता था। 95 में दिस डिपार्टमेंट वाज सेपरेटेड एज ए विकलांग कल्याण, later on it was विकलांगजन विकास विभाग। नाउ इट इज नोन एज दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। सर, वी हैव 75 districts, 823 blocks. As per census 11,
we have 52 lakhs population of disabilities, but अब उस समय जो थी कैटेगरीज वो 7 कैटेगरीज थी, अब 21 जो कैटेगरीज हो चुकी हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की दिव्यांगजन की संख्या। कमिश्नर ऑफिस का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ सर 20 सितंबर 1998, और तब से हमारे यहाँ एडिशनल चार्ज में ही कमिश्नर रहते थे। बीच में 2003 में one commissioner was appointed as an independent judge, और एक अभी ये एक्ट आरपीडी एक्ट आने के बाद में 2018 से 21 तक इंडिपेंडेंट चार्ज रहा, एंड प्रेजेंटली द चार्ज इज बीइंग होल्डेड ओवर विद स्पेशल सेक्रेटरी एज एन एडिशनल चार्ज। आई एम लुकिंग आफ्टर एज ए डिप्टी कमिश्नर लास्ट फॉर मोर देन 11 years। सर लास्ट ईयर में जो हमने रिड्रेसल किए हैं ग्रीवेंसेस के, वो 7,604, out of this only 9 cases were pending and rest of 7,597 cases were resolved। हमारा जो सिस्टम होता है सर, हमने every district magistrates को we have nominated the additional commissioner on district level, और उनको सारी शक्तियाँ सारी पावर्स दी हुई हैं जो हमारे कमिश्नर को हेडक्वार्टर पे होगी। साइमल्टेनियसली सर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण ऑफिसर्स होते हैं उनको हमने वी हैव नॉमिनेटेड टू असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल कमिश्नर एज असिस्टेंट कमिश्नर। तो उस लेवल पे भी उनको दिव्यांगजन को काफ़ी सहूलियत होती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट पर ही कंप्लेंट्स का अपने प्रॉब्लम्स का रिड्रेसल करा। इसके अतिरिक्त सर हमारे पास ऑनलाइन कंप्लेंट्स जो भी आती हैं उस पर हम देखते हैं, और हमारे यहाँ कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं ली जाती है। अगर किसी सादे कागज पर भी एक दिव्यांग की शिकायत आती है हम उसको इमीडिएटली एंटरटेन करते हैं। बस एक ये कंपल्शन ये रखना चाहते हैं कि उसके साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भी दे पाता है, then while writing to the concerned department और ऑफिसर हम ये भी मेंशन कर देते हैं कि इसका परीक्षण कर लें कि ये दिव्यांग है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी केसेस हमारे पास सर ऐसे भी आ गए हैं जो दिव्यांग नहीं होते थे और वो जनरल जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके रेज कर देते हैं इशूज, और हमें उसमें कुछ कहीं पे कठिनाई आती है जब रिपोर्ट्स आती। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा बहुत अपना ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रखते हैं सर, और मैं आज बहुत प्राउड के साथ बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑफिसर ऐसा नहीं है या पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है जो ये नहीं जानता है कि दिव्यांगजन का भी एक न्यायालय है। आज उनके अंदर ये अवेयरनेस आई। व्हेन आई जॉइंड दैट टाइम जो केसेस का नंबर था वो ऑलमोस्ट 250 हुआ। व्हेन आई जॉइंड इट इमीडिएटली रेज टू 3,239 एंड नाउ इट इज लास्ट एज आई टोल्ड यू कि 7,604 केसेस पहुंचे हुए हैं, और एवरी टाइम हम लोग इसको इंक्रीज ही होता जाता है। काम कर रहे हैं सर, इसलिए अवेयरनेस आती है। डायरेक्टरेट हमारा सेपरेट है और मॉनिटरिंग की पावर जो है भी हमारे डायरेक्टर के लेवल पर ही रहती है। कमिश्नर के पास जो है वो रिड्रेसल कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांस रिड्रेसल के इश्यूज ही रहते हैं। कोविड के कारण उनका साहब रिक्वेस्ट करेंगे 2 मिनट में प्लीज वाइंड अप कर दीजिए। सर due to COVID sir we could not conduct more mobile courts, but last in the month of September 17 September we had conducted a mobile court and in our Chief Minister's district Gorakhpur, and we registered 266 cases in a day and we resolved. After just going from here, on 12th of this January we are going to have a mobile court at गाजियाबाद। तो ये हमारे सर हमारी वर्किंग्स हैं सर, और जो भी इश्यूज ऐसे आते हैं हमारे पास, जैसे केसेस आए सर इरिगेशन में, वहाँ पे क्या होता था कि जो डिसेबल्ड्स हैं वो अपनी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग अगर वो प्रमोट हो सकते हैं उनको भी उन्होंने उसमें रख दिया डिसेबिलिटी की कैटेगरी में। हमारे पास केसेस आए सर, हमने उसको 8 इंजीनियर्स के पोस्ट को अधिसंख्य पदों का सृजन करा के
और 8 जूनियर इंजीनियर्स को प्रमोट कराया जाए। थैंक यू वेरी मच, ये बहुत अच्छा सर, आपने बात कही। इसके साथ हम समाप्त करना चाहेंगे आपके। सर थैंक यू। ठीक है, अब शर्मा जी नौ आप शायद एक ये वीडियो दिखाने वाले हैं, उसके संक्षिप्त में हम लोग कुछ चर्चा करें। उससे पहले एक थोड़ी वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा जो राजस्थान जिस पे वर्किंग कर रहा है। शायद हमें RPWD एक्ट 2016 की महत्ता भी इसके बाद समझ में आए, कमिश्नर पावर्स जो हैं वह भी सब हमें अच्छे से समझ में आए कि हमें RPWD एक्ट 2016 में एक स्टेट कमिश्नर को या चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया को कितना एम्पावर्ड किया हुआ है यदि हम उन पावर्स को यूज करते हैं तो विद ऑल डिपार्टमेंट्स। तो स्टार्ट राजस्थान में अभी जो कुल जो तहसील हैं 392 हैं। जब हम इस पोजीशन पे आए थे तो हमने आके ये देखा कि यदि डिसेबल्ड्स को मालूम नहीं होगा कि उनका एक एक्ट है, उनका एक कमिश्नर है और एक कोर्ट भी लगाया जाता है, यदि ये मालूम नहीं होगा तो डिसेबल्स हमारे पास कैसे आएंगे। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम तैयार किया। 7 संभाग हैं राजस्थान के और 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 392 तहसील्स हैं। उसके अंदर हम खुद हर रोज 3 तहसील पर जा रहे हैं राजस्थान की और वहाँ जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, उनको उनकी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं, उनको योजनाओं के बारे में भी अवगत करवा रहे हैं, RPWD एक्ट में क्या राइट्स हैं इनसे भी अवगत करवा रहे हैं। आज आप देखिएगा कि 100 तहसील हमने कंप्लीट की और हमारे पास 27,000 के नियर अबाउट ग्रीवेंसेस हमने खुद कलेक्ट की एक डिसेबल्ड्स के पास जाकर, और उनका 100% डिस्पोजल भी है। क्योंकि इस तरीके के प्रोग्राम यदि हम चलाते हैं तो आज मालूम चलता है कि विशेष योग्यजनों को कि आज कमिश्नरेट बना हुआ है, और जब कमिश्नरेट का मालूम चलेगा तभी हमारे पास समस्याएं भी आएंगी। आज यदि हम कमिश्नर, हम सब यही अगर हम ठान लें कि हर जिले में या तहसील पे जैसा भी अपनी सक्षमता के आधार पर यदि हम कैंप हम खुद जाकर लगाएं तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो प्रशासन अलर्ट रहता है क्योंकि आप एक स्टेट कमिश्नर हैं और सभी डिपार्टमेंट्स वहां रहते हैं, और डिपार्टमेंट्स में भी अवेयरनेस आती है कि डिसेबिलिटी को लेकर एक कमिश्नर है। और जब डिपार्टमेंट्स अवेयर होते हैं तो बहुत सी ग्रीवेंसेस हम आपको बताएं कि आपके कमिश्नरेट तक नहीं पहुंचेंगी। बहुत सी ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है जब उन्हें मालूम चलता है कि आपके जुडिशियल पावर्स हैं। इन सब बातों को लेकर इनकी जरूरत है कि डिसेबिलिटी कमिश्नर शुड गो इन अ फील्ड। अगर वह जाएगा अपने हिसाब से कैंप लगाएगा, जैसा कि हमने यहाँ किया। मैंने लास्ट 10 मंथ में 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रेवल किया राजस्थान में, 27 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुनवाई की है, और अभी 100 तहसील हमने कंप्लीट किया है। जिस दिन 392 तहसील ऑल अक्रॉस द राजस्थान वी विल कंप्लीट, आई नो दैट कि 2.5 लाख से भी अबव ट्रेवल मैं कर चुका हूँगा। और मुझे इस बात का अच्छा लगता है कि राजस्थान के अंदर 10 लाख से भी अधिक विशेष योग्यजनों तक यह मैसेज कन्वे हो गया है कि एक स्टेट कमिश्नर है। अब आप सोचिएगा, फेब से लेकर आज जनवरी तक मेरे पास 37,000 से भी ज्यादा ग्रीवेंसेस आना इस बात का द्योतक है कि आज उन्हें मालूम है कि हमारे लिए भी एक कमिश्नरेट बना है। और कमिश्नरेट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि सभी विभागों को वह अलर्ट करे। इसके लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से बैठक ली। आज कुछ बात सेक्रेटरी साहब ने कल बोल रहे थे, मैंने इसको सुना। ये वास्तव में ही बहुत शानदार बात है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे हार्ड होकर, जिससे कुछ पेनल्टीज लगानी पड़ेंगी, जिससे कि पता लगे कि हम लोग भी कुछ हैं। और इसके लिए हमने हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, सबसे हमने स्वयं बैठक ली हमारे आयुक्तालय विशेष योग्यजन के अंदर। और बैठक लेने के बाद अब आप देखिएगा, आज कमिश्नरेट जो आपका बना हुआ है स्टेट कमिश्नर राजस्थान के निर्देशन में UDH काम करता। कितनी बड़ी बात है कि हम जब डायरेक्शन देते हैं तो UDH अपनी एक टीम अपॉइंट करता है, और उसके बाद कमिश्नरेट की टीम और UDH की टीम, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे वह गवर्नमेंट हो, दोनों ही बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन करता है और उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन भी लिए जाते हैं। रही बात स्कूलों की, अभी मैं एक्ट में देख रहा था प्राइवेट स्कूल्स को ये RT एक्ट 2009 सेक्शन 35 में एडमिशंस लिए जाने चाहिए, इसके लिए भी हमने प्रोविजन किए। और फाइनली एक स्कूल का हमारे पास केस आया, उसमें एक बच्चे को मना कर दिया गया था प्राइवेट स्कूल में, तो उसमें हमने डिसीजन में हमने निर्णय दिया और फाइनली प्राइवेट स्कूल को एडमिशन लेना पड़ा। और आज स्कूल एजुकेशन के साथ हमारी एक टीम अपॉइंट की गई है कमिश्नरेट की। कमिश्नरेट के डायरेक्शन में सभी स्कूल्स में जा रहे हैं और हम यह पता कर रहे हैं कि पिछले 8 से 10 साल में आपने कितने स्पेशली एबल्ड बच्चों को पढ़ाया और आपके पास कितने स्पेशल टीचर्स हैं, क्या आपकी बिल्डिंग एक्सेसिबल है। यह बात स्टेट कमिश्नर्स को भी भली भांति हम सबको मालूम होना चाहिए कि सारी जिम्मेवारी गवर्नमेंट की नहीं है।
प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही लाइबल है जितना गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट नहीं हो तो डिसेबल पर्संस के लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल है, हम सब जानते हैं। बट गवर्नमेंट ने इतना सुंदर एक्ट हमें दिया है, इतनी हमें एम्पावर्ड किया है, तो प्राइवेट सेक्टर को जाकर बताइए, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको इसके अंदर हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बिल्डर्स के खिलाफ हमारे जयपुर में, राजस्थान में हमने कार्रवाई की और फाइनली बिल्डर्स को आज 1000 फ्लैट्स की बिल्डिंग बनी हो या मॉल्स बने हो, फाइनली हमारे ऑर्डर के बाद बिल्डिंग तोड़नी पड़ी और उसको एक्सेसिबल बनाना पड़ा। बनी हुई लास्ट 5 ईयर से बनी हुई बिल्डिंगों को भी हमने तोड़वाया। प्राइवेट बिल्डर्स और होटल्स, मॉल्स सब में एक्शंस लिए जा रहे हैं और सभी डिपार्टमेंट्स की टीम हमारे साथ इसके अंदर मिलकर काम कर रही है। यह बहुत सुखद है कि हमने किसी भी डिपार्टमेंट को, आज हायर एजुकेशन में जाइएगा हमारे साथ एक टीम एम्पैनल्ड है, टेक्निकल एजुकेशन में जाइएगा टीम एम्पैनल्ड है, लोकल गवर्नमेंट में जाइएगा टीम एम्पैनल्ड है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ लेटर निकालना है कि जस्ट सेंड योर नोडल ऑफिसर, वी आर गोइंग टू इंस्पेक्ट द बिल्डिंग्स ऑल रूल्स, और वो हमारे साथ जाते हैं। और हमारे पास बिल्डिंग सेगमेंट को लेकर 52 पॉइंट्स राजस्थान गवर्नमेंट ने आप भवन विनिर्माण नियम 2020 पारित किया और उसमें सेक्शन 14 में 52 पॉइंट्स बनाए। किसी भी भवन को आप बनाएं, चाहे वह प्राइवेट है या सरकारी है, ये 52 पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और उसके आधार पे हम लोग अभी पूरा इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। तो आप ये आप क्षमा चाहेंगे सर? बहुत अच्छा, आपने सर समय दिया, आपने बुलाया। हाँ सर। I am Shankar Raman from Amateur Asangam, Tamil Nadu. I am a chartered accountant. Our founder is Padmashri is also there. I have been listening to all the debates over here and I am very much inspired. And even more inspired by the Rajasthan, what you have been saying, making us feel a bit jealous also. So wonderful work. But I have a few things. Okay? Do you have a district level ombudsman, kind of a grievances redressal forum that the RPWD Act has existed? Do you have anything at the district level? And secondly, do you have workers at the field level other than your staff of the department? Do you have anybody like the Anganwadi workers or somebody like that, which have been appointed in the health sector? Do you have any such workers at the local taluk and district levels? And third thing is, you are talking about UDH. Is it urban development or? Urban development. Urban development. So do you have an access audit as a precondition for approval of buildings? And finally, your commissionerate, is it a separate independent judicious, quasi-judicious body? Or do they report to the executive? Because a director reports to the executive and he is not independent. If the commissioner is quasi-judicious authority as envisaged in the Act, then the commissioner can perform independently and pass judgment. So do you have such a concept with you? If you have done this, that would be a great example for others. And with respect to Uttar Pradesh also, Uttar Pradesh Commissioner was also very inspiring. And he has told that there are 7,000 plus workers. Are they workers under the department or we can't understand what the workers are? Thank you. आपने जो बातें हमें कही इसके लिए पूरा इंडिपेंडेंट फॉर्म हमारे पास है और इसके लिए हम हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इस कमिश्नरेट को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पावर दिया हुआ है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज नो बैरियर्स। In 11 months, I have all things. I have a constitutional power also. So उसका पूरा हम लोगों ने जिस तरीके से हम लोग उसको रूल्स रेगुलेशंस एक्ट में लाके इंप्लीमेंट कर सकते थे, किसी भी डिसीजन को किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा कभी चैलेंज नहीं किया गया, इवन उसको इंप्लीमेंट किया गया। और इसलिए डिस्ट्रिक्ट उनका क्वेश्चन कुछ अलग था, तो उनका यही कहना है डिस्ट्रिक्ट लेवल। To answer your question, sir, basically each and every district, hello. Each and every district we have a grievance redressal officer. We have a judicial. Yes. Yeah, it is there. Secondly, is the commissioner independent? Do we have a? Absolutely, absolutely. Do we have a director separate? No. Normally, in all the states, it's an autonomous body kind of a thing, but they are working. No. We have directorate also. We have directorate also. Directorate है, but वो तो अलग से, there is a coherence. Directorate commissioner was independent. The problem is the director and commissioner. If the director and commissioner are the same person,
then there is a conflict of interest. No, this is separate. Yeah. In Rajasthan, separate. No, it is separate in many states. I think UP also. UP also the separate, the directed ones. You are right, sir, that they need to be separate. And we value your points, and it is a very valuable point. And we all are working in that direction. Maybe in some states, as has been mentioned, it is run on additional charge basis. But what you have pointed out is very well taken, and I think that is the purpose of the workshop. Maybe we don't have everything here, but we learn and we discuss the issue. We come up to know what are the directions or what are the issues we need to focus. And I think the successful of any workshop or any deliberation is not the answer we get to the question, but the questions which we carry with us. So that is, I think, that is the essence of the workshop like this. And I think with this note, because we are already with time over and with the approval of our secretary, sir, we will wind up this session, because the last session is going to be much more vibrant, where we will have many more such. And I think, sir, you are also likely to join. So with this, I thank all the panelists for their valuable time and for their valuable contribution to this deliberation. And thank you all. And we will now straight away move to our last session.